Good morning, students. Welcome to social science class. Yes, students, today we are going to start a new chapter, chapter 8. It is just similar with the previous chapter 6. Okay, we have already done chapter 6, that is life on the earth. In this chapter, we have read about different landforms, vegetation, and animals on that landform due to their climatic condition and temperature. And in this chapter, we will learn the conditions of climate and temperature and landform affects the human being. Okay, so life on different landforms. Okay, so this is the main objective of chapter, that we have to discuss the living condition of that particular area, that which type of condition we have to live in desert or in grasslands, in cold desert, or the area with heavy rainfall. ठीक है, so in this chapter we will discuss all these things. So we will describe the life in desert, both the desert, the Sahara and Ladakh desert, in grasslands, prairie and wild, Amazon basin and Ganga Brahmaputra basin. So we will discuss the living condition of these areas. So let's start with desert. What is desert? Desert is an area having extreme temperature condition with very low amount of rainfall and scanty vegetation, that we all know. वो एरिया जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, बहुत कम वेजिटेशन है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, दैट एरिया इज़ नोन एज डेजर्ट. Deserts are of two types, hot desert and cold desert. In hot desert, the temperature is high, and in cold desert, temperature is below the 0 degree also. Okay, so let's discuss the hot desert. Here we have given Sahara. Sahara desert is in अफ्रीका. अफ्रीका में नॉर्दर्न साइड पर हमें सहारा डेजर्ट मिलता है, इन द नॉर्थ ऑफ कॉन्टिनेंट अफ्रीका. And the land is covered with sand. The whole land is covered with sand. There is only a single river, that is Nile river. ये जो आपको एक बहुत थिन सी लाइन दिख रही है, this is the river Nile. Okay, and this Nile river gives water to the area, provide water to that area. So let's discuss the location of Sahara Desert. Sahara Desert is the world's largest and hottest desert on the earth. सबसे बड़ा डेजर्ट और सबसे हॉट डेजर्ट है Sahara Desert. And Sahara itself means desert. Sahara का अपना मीनिंग ही डेजर्ट होते हैं. जैसे हर वर्ड का कोई मीनिंग है, तो सहारा का मीनिंग क्या है?
In Arabic language, it is called desert. It converts the entire northern part of Africa. It lies between Atlantic Ocean in the west, this side Atlantic Ocean, okay, upper side पर Mediterranean Sea है, right, and Red Sea in the east, east side पर Red Sea है, okay. So which water bodies covered it? Upper side means in the north it has Mediterranean Sea. In west there is Atlantic Ocean, and in east there is Red Sea. Okay. We can find ह्यूज माउंट्स ऑफ सैंड ड्यून्स. बहुत बड़े बड़े हमें सैंड ड्यून्स मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े सैंड के ड्यून्स मतलब टीले सैंड के जो कलेक्टेड सैंड होते हैं उसका बहुत ऊंचा सा एक टाइप हमें विजिबल होते हैं जिसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो बाउंडेड बाय अ चेन ऑफ माउंटेन्स इन द नॉर्थ कॉल्ड एटलस माउंटेन. नॉर्थ साइड में माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी चेन है माउंटेन्स की, एटलस माउंटेन्स की. ओनली सोर्स इज नाइल रिवर. वी हैव डिस्कस्ड कि सिर्फ जो वाटर सोर्स है दैट इज नाइल रिवर, एंड वी कैन फाउंड वेजिटेशन एट द बैंक ऑफ दिस रिवर. एंड जो ह्यूमन सेटलमेंट है इट इज़ ऑल्सो नियर द नाइल रिवर और नियर एनी वाटर बॉडी. द एवरेज रेनफॉल इज लेस देन 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर इट इज़ वेरी मच लो. जो यहाँ एनुअल रेनफॉल है वो सिर्फ 20 सेंटीमीटर तक ही है. Mostly the climate is hot and dry with clear sky. Sometimes the temperature recorded about 58 degrees Celsius. Okay, and day temperature is about 43 degrees and the temperature at night goes down about 10 डिग्री. रात के टाइम पर जो सैंड है वो कंपैरेटिवली जल्दी कूल हो जाती है. तो एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन टू 10 डिग्री सेल्सियस एंड एट डे टाइम द टेम्परेचर इंक्रीजेज about 43 degrees Celsius, and sometimes it recorded as 58 degree Celsius also in Libya. ठीक है, सहारा में लीबिया नाम की जगह पर भी जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया जाता है 58 डिग्री सेल्सियस एट द प्लेस अल अजीजिया. Okay. So which type of vegetation we have in desert area? In desert area we have scanty vegetation like cactus or thorny plants. Okay. In Sahara desert the date palm tree is the common tree. In some area we find bushes. Clear? Because of less rainfall this type of vegetation grows in desert area.
Vegetation can be found only near the Nile river. We have discussed before कि Nile river के पास ही vegetation मिल सकती है. Sahara desert covered with vegetation like grasses, shrubs, bushes. Plants have long roots that reach deep into the soil to absorb moisture. Because it doesn't have rainfall, it doesn't get high rainfall, so the level of underground water is low. Okay, so the plants and trees or bushes has long roots to get the water from the earth. ठीक है, अर्थ से अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट करने के लिए, सर्वाइवल के लिए वाटर की ज़रूरत है सबको. तो अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट करने के लिए जो कैक्टस या अदर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स बहुत डीप जाती हैं अर्थ में टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर. द important trees or vegetation are cactus and date palm tree. Date palm tree is the common fruit here, and animal and people both eat that fruit. The sap of date tree is used to make wine. Okay, उसकी sap को वाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और उनके सीड्स को क्रश करके एनिमल्स के लिए फूड प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, द सीड्स ऑफ डेट फ्रूट आर क्रश्ड एंड यूज्ड एज द फूड फॉर कैमल एंड गोट्स, एंड दे मेक baskets and ropes with the leaves and trunk of these trees. इन ट्रीज की जो लीव्स हैं उसको ज्वाइन करके बास्केट्स बनाई जाती हैं और रोप भी फॉर्म की जाती है. फॉक्स, जैकल, सैंड फॉक्स, कैमल, these are the main animals of Sahara. We all know that camel is the main animal of desert. It is called ship of desert also, right? तो सहारा डेजर्ट में भी कॉमन क्या है? कैमल, सैंड फॉक्स जो रेत के ऊपर चल सके वो फॉक्स, जैकल और फॉक्स. These are the main animal species we can found in Sahara desert. Camel has a hump. कैमल की बैक पर एक इस तरह से ऊंचा सा जो एरिया है दैट इज कॉल्ड हम्प, और इट कैन स्टोर वाटर एंड फैट इन दैट हम्प टू लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज. दिस हम्प हेल्प कैमल टू लिव विदाउट फूड. कैमल स्टोर फूड इन दैट, इट मीन्स फैट इन दैट. अपने हम्प में जो उसके यहाँ पर ऊपर इस तरह से उभरा हुआ एक पोर्शन होता है वहाँ वो फैट को स्टोर करके रखता है और ये फैट हेल्प करती है बहुत दिनों तक वर्क करने में. यू कैन फाइंड स्मॉल reptiles and insects also. Frog, snake, crocodile, these are the reptiles. Reptiles means वो animals जो रेंग कर चलते हैं. ठीक है, and insects like scorpion and spider also inhabit this desert. स्कॉर्पियो बिच्छू जो है वो और स्पाइडर मकड़ियाँ भी यहाँ पर हमें मिलती हैं. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी कि सहारा डेजर्ट का वेस्ट साइड का पार्ट जो है वो रॉकी डेजर्ट है. हेयर आर मोर रॉक्स, ज़्यादातर रॉक्स हैं यहाँ पर. एंड द लैंड इज़ बैरन, बंजर ज़मीन है, अनइनहैबिटेड. यहाँ पर लोग
नहीं रहते हैं बिकॉज इट इज़ अ बैरन लैंड एंड रॉकी एरिया। तो नॉर्थ वेस्ट साइड पर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो लो है। ओके, population is mainly concentrated near the water bodies like osses. Now what is osses? Osses is an area where the water comes upward easily without human effort. जो अंडरग्राउंड वाटर है वो उस एरिया में अपने आप ऊपर आ जाता है और एक पॉन्ड टाइप का एरिया डेवलप होता है। ओके, एंड ड्यू टू वाटर जो वेजिटेशन है वो भी इंक्रीज होती है एंड पीपल स्टार्टेड लिव ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ऑसिस के पास रहते हैं या फिर कोई रिवर है उसके आसपास ही लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज पॉसिबल अराउंड द ऑसिस। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द ऑसिस। ठीक है, यहाँ पे आपको वाटर बॉडी दिख रही है और इस वाटर बॉडी के आसपास वेजिटेशन है। ओके, सो वेजिटेशन ग्रो ओनली नियर द ऑसिस एंड रिवर एंड मेजर क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं वो रिवर या ऑसिस के आसपास ही ग्रो होते हैं बिकॉज क्रॉप्स नीड वाटर। सो मेजर क्रॉप्स हेयर आर व्हीट, मेज, barley, millets, beans, etc. गेहूँ, जवार, बाजरा, बीन्स, ये सब चीज़ें, ये सब क्रॉप्स ग्रो होती हैं। पीपल प्रेफर वाइट एंड लूज क्लॉथ टू बियर द हीट। एज वी ऑल नो दैट वाइट कलर कैन नॉट absorb the heat. Dark colors absorb the heat. So people of Sahara wear white colored loose clothes. They wear gown type clothes to bear heat. इतनी ज़्यादा गर्मी को सहन करने के लिए वो गाउन टाइप लूज क्लोथ्स वियर करते हैं एंड लाइट कलर्स के क्लोथ्स वियर करते हैं और उनके सिर पर एक डिफरेंट सी कैप होती है, वो भी क्लॉथ की बनी होती है एंड इट सेव्स देम फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट। वो वहाँ के लोगों को एक्सट्रीम हीट से सेव करती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट सहारा डेजर्ट कि ये नॉर्दर्न एरिया में है। यहाँ पर सिंगल रिवर है, नाइल रिवर, एंड दिस रिवर प्रोवाइड्स वाटर एंड जो नाइल रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। कीप इट इन माइंड, नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर और वी कैन फाउंड vegetation near the river and osses. Good. And people wore white color loose clothes. ठीक है, and vegetation like cactus and date palm tree is visible in that area, and people use sap of date palm tree to make wine, and the leaves and barks of that tree uses to make baskets. Very good. बास्केट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ लाइफ people live in desert area, in Sahara desert. Okay, I hope आपको समझ आया। Read the chapter from the book, and for today that's it. Thank you and have a nice day.